selection. So selection is when we are selecting one of the candidate from which we have the candidate which we have recruited, which we have attracted, है ना, for the vacancy. From that, the suitable candidate is selected in the selection process. So, as an end result of recruitment function, organization receives large number of application and selection process begins at the large creation. तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं एंड द रिक्रूटर नीड टू प्रोसेस द स्क्रीनिंग टास्क, है ना, ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. एंड इट सिलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज रिजेक्शन, है ना. इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिजेक्शंस होते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं. सो इट्स अ वेरी माइनर क्वेश्चन विच इज बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स, विच इज़ द नेगेटिव प्रोसेस. सो वी कैन से दैट selection is a negative process. So first is let us begin with the selection ka process. First is preliminary screening. It is done to eliminate the unqualified and misfit candidates based on information supplied in the application form. When the candidate used to fill the application form, in that case है ना, जो रिज्यूमे होता है उसको देख के ही हम लोग जो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में उसको ही रिजेक्ट कर देते हैं. Why the candidate is been rejected in this? It's a first step in which suppose we need an MBA student, है ना, who has done MBA, he has done completed MBA in HR. Okay, so the requirement is of MBA student who has done specialization in HR. So he has and the candidate who is still in a graduation process and he filled the form, that means he is not eligible for this, so he is unqualified for the particular job which we had decided, which we are recruiting. ठीक है, सो दैट तो वो क्या हो गया हमारे लिए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती जाएगी फॉर, है ना, जो अनक्वालिफाइड होंगे उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे. तो फर्स्ट टास्क इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. नेक्स्ट उसके अंदर से जो क्वालिफाइड होंगे वो जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड हो जाएंगे, दैट इज सिलेक्शन टेस्ट. व्हाट हैपेंस इन सिलेक्शन टेस्ट? प्रिफर्ड कंडक्ट रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट. उसमें क्या देखा जाता है, द प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट उसमें क्या बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट, उसका IQ टेस्ट लिया जाता है, और दैट कैंडिडेट ही इज एलिजिबल फॉर दिस और नॉट, ही हैज़ दैट इंटेलिजेंस और नॉट. नेक्स्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, personality test, trade test, interest test. These are some kind of tests which has been taken by the recruiters to find the suitable candidates for the vacant job. Next comes is employment interview. Now the specialized team, है ना, the specialized team used to the experts of the organization used to take final interview of that candidates who have been selected in the selection test. First was preliminary screening. Then the selection test. The selected student goes to selection. After the selection test, the employment interview has been taken. It is done by the experts of the organization, where the specialized candidate and professional specialist who has a great knowledge used to take the interview of the employers of the new peoples for the further process. So the candidates who qualify the test are called for interview. To conduct the final interview, panel experts is called. To conduct the interview, the experts is being called. The consultancy who are specialized in the field ask questions and the candidates to test his प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब. उसमें क्या होता है कि जो जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमें फाइनेंस के लिए जो है हमने जो रिक्रूटमेंट रखा गया है, तो फॉर दैट तो स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए उनके अंदर. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू दैट मैटर फॉर विच दे हैव बीन सेलेक्टेड. Many advantages over written test because in interviews you cannot find out the confidence level of the candidate along with its professional knowledge. तो क्या होता है कि इसमें हमेशा एक बार में हम किसी को चूज़ नहीं कर सकते हैं. तो फॉर दैट रिटन टेस्ट इज ऑल्सो बीन टेकन टू फाइंड आउट दैट ही इज हैज़ दैट प्रोफेशनल नॉलेज और नॉट. इंटरव्यू गिव्स द चांस टू कैंडिडेट ऑल्सो टू क्लैरिफाई द क्वेरीज रिगार्डिंग सैलरी. उसमें सैलरीज के रिगार्डिंग भी जो है डिस्कशन होता है. वर्किंग कंडीशंस एंड पोजीशन एक्सेट्रा is also being discussed. Next is checking reference and background. After the employment interview is done and the candidate is selected, then he moves to the fourth
fourth step, that is selection and reference and background check, where the candidates रेफरेंस कि किसके थ्रू आए हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड जो है चेक किया जाता है कि फ्रॉम विच बैकग्राउंड ही केम फ्रॉम, लाइक बिफोर दैट ही वाज इन विच जॉब एंड व्हाई ही लेफ्ट द जॉब, रीजन बिहाइंड दैट. Candidate is asked to give the names of two references. In this, a candidate qualified interview. Then, the organization prefer to check with the reference about the personal character of the candidate. Organization can cross-check the information given to the candidate with the reference. सो नेक्स्ट इज आफ्टर द चेकिंग रेफरेंस, उसके बाद उसका जो है रेफरेंस बैकग्राउंड चेक करने के बाद वो फाइन लिखता है. देन वी केम टू अ फाइनल डिसीजन, दैट इज सिलेक्शन डिसीजन. द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक आर इंक्लूड टू द सिलेक्शन लिस्ट. वो फिर उसका सिलेक्शन लिस्ट में आ जाता है. एंड मैनेजर सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द लिस्ट. जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन. आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन इज बीन कंडक्टेड. बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर, द कैंडिडेट सेलेक्टेड आर सेंट टू द मेडिकल फिटनेस टेस्ट. कि उसको फिटनेस टेस्ट जो है कराना पड़ता है, दैट ही इज फिजिकली फिट और नॉट. अपॉन दिस, नेक्स्ट इज जॉब ऑफर. जॉब ऑफर ले लिया जाता है जिसके अंदर मेडिकल. आफ्टर दिस, इन लेटर द ज्वाइनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जॉब्स एक्सेट्रा आर मेंशन जनरली इन द रीजनेबल गिवन कैंडिडेट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है व्हेन द कैंडिडेट एक्सेप्ट द. आप जब जॉब ऑफर मिल गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को जो है एक्सेप्ट कर लेता है. एंड देन फाइनली ज्वाइनिंग. दैट दिस वाज द, जिसमें फर्स्ट स्टेप हो गया प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जहाँ पे जो है एप्लीकेशंस जो होती है उसमें से चेक करके हटा दिया जाता है. वो जो क्वालिफाइड कर लेता है वो नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट के लिए चला जाता है. देन द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स यूज टू टेक इंटरव्यू, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. फिर उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है. फिर सिलेक्शन डिसीजन ले लिया जाता है. देन मेडिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर कर दिया जाती है. देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. So this was the whole selection process of. So I hope it is clear to you all.